Hey guys, this is Saurabh. Welcome to Python Project YouTube channel. In this channel, you got many interesting Python project as a beginner. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे how to make GUI calendar through Python coding. So let's start this video. हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दो मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, named as Tkinter और tk calendar. Tkinter is a standard library of Python and it is pre-installed in Python 3. तो हमको सिर्फ tk calendar ही इंस्टॉल करना पड़ेगा यूजिंग pip कमांड. उसके लिए हमको हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है. वेट, आई एम ओपनिंग माय कमांड प्रॉम्प्ट and here is my command prompt and let's write pip install tk calendar, enter. और देखिए मुझे क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड. इट मीन्स मैंने ये पहले ही इंस्टॉल कर लिया है. सो क्लोज करेंगे अभी हम इसको एंड क्रिएट अ न्यू फोल्डर. is a Python folder named as GUI Calendar. Enter. Let's increase the size and give it as comment GUI Calendar. Enter. Again comment. We are installing one module. Pip install tk calendar, enter. And we are going to importing our Tkinter from Tkinter and import. We are going to import all the things. It means Tkinter मॉड्यूल हम लोग टोटली इंपोर्ट कर रहे हैं. इसके लिए हम लोग एस्ट्रिक्स का यूज करेंगे. एंटर एंड फ्रॉम tk calendar इंपोर्ट एंड इसको भी हम लोग टोटल इंपोर्ट करेंगे. तो एस्ट्रिक साइन, एंटर एंटर. अभी हम लोग रूट एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और इसको कॉल करेंगे tk को. tk and give one title, root dot title. Let's calendar our title, calendar, enter and give geometry, root dot geometry. Geometry, this is a size, you can say that height and width 500 into 400. and अभी हम लोग इनपुट लेंगे यूजर से ईयर. so let's define one variable y equal to input prompt as year and again we are taking one variable as month m equal to input and named as month and day. Input named as day and one more thing, we are
going to conversion of data type int and हम लोग कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप क्यों कर रहे हैं बिकॉज ये हम लोग कोई भी इनपुट लेते हैं यूजर से तो पाइथन ये अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है बाय डिफॉल्ट इट कन्वर्ट इन स्ट्रिंग सो हम लोग को उसके लिए हम लोग को स्ट्रिंग नहीं चाहिए हम लोग को इंट में चाहिए इंटीजर डेटा टाइप में चाहिए इसके लिए हम लोग डेटा टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं इंट this int done ओके अभी हम लोग कैलेंडर को डिफाइन करेंगे कैलेंडर इक्वल टू कैलेंडर एंड रूट कॉमा year इक्वल टू हम लोग y देंगे कैपिटल Y स्मॉल y कॉमा मंथ equal to m comma day equal to d and this is done our calendar and again we have to call up अभी हम लोग को कैलेंडर डॉट पैक करना है बिकॉज हम लोग को कैलेंडर के साइज में पैडिंग करना है पैड इक्वल टू लेट्स गिव इट 50 एंड अभी हम लोग मेन को कॉल कर रहे हैं रूट डॉट मेन लूप कैलेंडर GUI कैलेंडर प्रोग्राम डन हो गया हम लोग रन करते हैं ओके टर्मिनल ईयर लेट्स गिव इज 2021 मंथ 02 and date 06 and here is our output you can see that and this space is you can say that padding I'm giving it as a 50 let's change this give as 70 and again run this code year 2021 month 02 day 06 and here you can say that here our size is increased padding as 70 so this is done our GUI calendar you can change this anything but by default it will come as 6 Saturday today Saturday yeah that's it from this tutorial thank you so much